Hello dear students. Good morning. Welcome again in your class. I hope you all are fit and fine. And today we are recapitulating our new topic in grammar and the topic is pronoun. Before knowing it, you will tell me about noun. अब आप बताइए कि noun क्या होता है? Noun is the name of person, place or things and animals also. तो अब ये pronoun क्या होता है? So pronoun is a word that replaces the name of person or object. Like I, you, he, she, it. These all are called pronoun. Pronoun two types के होते हैं, singular और plural. तो plural pronoun क्या होता है? Pronoun used instead of more than one noun is known as plural pronoun. Singular pronoun, plural pronoun. सिंगुलर में I, you, he, she, it का यूज होता है और प्रोनाउन में we, you और they का यूज होता है. सिंगुलर जब कोई वन पर्सन हो तो उसके लिए सिंगल और जब मोर देन वन होते हैं तो हम उसको प्लूरल कहते हैं. So here is the example. Ria and Bob are friends. Ria and Bob go to school together. अब आप यहाँ पे देखिए रिया और बॉब टू पर्सन है और ये दोबारा फिर से हमने रिया और बॉब को रिपीट किया है. तो अवॉइड रेपिटेशन वी विल यूज प्रोनाउन हियर. तो यहाँ पे हो जाएगा रिया एंड बॉब आर फ्रेंड्स. दे गो टू स्कूल टुगेदर. नेक्स्ट इज दिस इज माई फैमिली. वी स्टे इन अ बिग हाउस. तो यहाँ पे वी जो है वो प्लूरल है. And this is also known as pronoun. You both are footballer. Do you play together? The word you is also a pronoun. यहाँ पे सामने वाले के लिए हम you का यूज करते हैं. The pronoun you is used when we are talking to someone in front of us. Words that are used in place of noun are called pronoun. तो हमारा students, what is pronoun? Pronoun is the word that are used in place of noun are called pronoun. Example, I, he, she, it, we, they and you. यहाँ पे देखिए she का use कब करते हैं? We use word pronoun she is used for a girl or a woman. For example, she is a doctor. She is Julie. Next is he. He का यूज कब करते हैं? The pronoun he is used for one boy or a man. Example, he is my father. He is a clown. Next is it. The pronoun it is used for animal or things. Just like it is a chair. It is a squirrel. It का यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए करते हैं और वो भी जब सिंगल हो. Next is they. The pronoun they is used when we are talking about other people, animal or things. Examples, they are playing, they are having fun. जब हम other people के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो एक से ज्यादा होते हैं, people हो सकते हैं, animals भी हो सकते हैं और things भी हो सकते हैं, तो हम उनके लिए they का यूज करते हैं. तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, they are playing and they are having fun. Next is we. The pronoun we is used when I am talking about myself along with other. जब कई लोग हो और उसमें मैं भी हूँ तब हम we का यूज करते हैं. जैसे this is Meera and I. We are friends. Next is this is Gio and I. We both love ice cream. So students, I hope you all have to understand pronoun. Now it's time to question answer. And the question is, fill in the blanks with suitable pronoun. Here are the questions. Question number 1. This is Shreya. Dash is holding a flower. Number 2. This is Bob and Julie. Dash are wearing crown. Number 3. This is Pranjal.
Dash likes to play football. Number 4. Dash is a blue bag. Number 5. This is Tina. Dash has blue scarf. Now, चलिए अब हम इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे टू फिल द प्रोनाउन. एंड द नंबर 1 इज दिस इज श्रेया. अब श्रेया तो एक गर्ल है, के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी का. शी इज होल्डिंग अ फ्लावर. नंबर 2, दिस इज बॉब एंड जूली. दैट आर वेयरिंग क्राउन. अब यहाँ पे देखिए 2 पीपल है, बॉब और जूली. तो जब 2 हो तो हम उनके लिए क्या प्रोनाउन का यूज करते हैं? वी यूज दे. Number 3, this is Pranjal and Dash likes to play football. Pranjal is the name of one person और या तो वो boy हो सकता है या फिर man हो सकते हैं. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे boy या man के लिए क्या प्रोनाउन यूज होता है? करेक्ट, he का. तो this is Pranjal, he likes to play football. Number 4, Dash is a blue bag. Black किसी पर्सन का नाम है? नहीं ना, दिस इज द नेम ऑफ थिंग्स. तो थिंग्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? यस करेक्ट, वी यूज इट. इट इज अ ब्लू बैग. नंबर 5, दिस इज टीना. डैश हैज अ ब्लू स्कार्फ. टीना इज द नेम ऑफ गर्ल. तो गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन. यस, वी यूज शी. दिस इज टीना, शी हैज ब्लू स्कार्फ. सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसे कंप्लीटली समझ भी लिया है. सो आई विल एंड द वीडियो हियर. सो कंप्लीट योर वर्क. टेक केयर. बाय. थैंक यू.